नमस्कार मित्रों, मैं अजय पाठक, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवापुरा से ई कंटेंट जिला बांसवाड़ा में कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 2 पदार्थ की संरचना एवं अणु में पदार्थों का शुद्धिकरण बिंदु के अंतर्गत अब हम बात करेंगे दो अन्य विधियों की, जिनका नाम है आसवन और प्रभाजी आसवन। आइए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आसवन यानी डिस्टिलेशन के बारे में। आसवन विधि में आमतौर पर जल में जो भी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को अलग करके शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि को आसवन कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों में जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है, यानी पानी वाष्प बन जाएगा, एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। जैसे जल का आसवन इसका प्रमुख उदाहरण है। आप स्क्रीन पर इसका चित्र देख सकते हैं। साथ ही साथ बोर्ड पर भी मैंने ये चित्र बनाया है, इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अशुद्ध द्रव को यहाँ फ्लास्क में भरा जाता है और उसे बर्नर से गर्म किया जाता है। तापमापी से हम इसका तापमान देख सकते हैं। जब जल की वाष्प बनती है तो निकास नली से ये वाष्प बाहर निकलती है। यहाँ संघनित्र से ठंडा जल डाला जाता है, जिससे वाष्प संघनित हो जाती है और द्रव में बदल जाती है। अशुद्धियां यही रह जाती हैं और शुद्ध जल हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। आसवन विधि के बारे में हमारा एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे पास है। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। Distillation is a method of obtaining pure liquid from a solution. In this process, the solution is heated so that the liquid evaporates. Let's understand this with an experiment. Take some salt water in a retort and heat the retort till the steam comes out of it. We will see the steam getting collected inside the beaker in the form of droplets of water. The steam condenses and reaches the beaker, and the salt left behind in the retort. This method of separation of soluble solids from liquids is called distillation. और आइए मित्रों, अब बात करते हैं प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इस विधि में हम उन द्रवों को अलग कर सकते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर होता है और जो आपस में घुलनशील होते हैं। विभिन्न घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में अंतर होता है, उन्हें इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेट्रोलियम द्रव यानी कि कच्चा तेल, अपरिष्कृत तेल या क्रूड ऑयल जो जमीन से निकाला जाता है। इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सब मिले हुए होते हैं। कच्चा काला तेल होता है ये, और उसमें से भिन्न द्रवों को अलग करने के लिए ये विधि उपयोग में ली जाती है। इसमें मिश्रण को गर्म करने पर प्रत्येक द्रव उसके क्वथनांक पर वाष्पित होता है। जब पूरे द्रव को गर्म करते हैं तो जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है वो पहले वाष्पित हो जाता है, और फिर इसकी वाष्प को प्रभाज स्तंभ से गुजारकर संघनित करने पर भिन्न भिन्न द्रव प्राप्त होते हैं। आप स्क्रीन पे चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रभाजी आसवन की विधि का संयंत्र होता है। पहले कम क्वथनांक वाला और बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से भिन्न अवयव जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि पृथक किए जाते हैं। तो मित्रों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी पदार्थों के शुद्धिकरण की। प्रभाजी आसवन से संबंधित एक और ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे पास में है। आइए हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। In our other videos, we have learnt how fractional distillation is used to separate hydrocarbons into fractions with a similar boiling point. In this video, you will learn the names of some of the most important fractions and their uses. As you are now aware, large hydrocarbons have higher boiling points and so are removed at the bottom of the fractionating column. Smaller molecules condense higher up the column. We will now take a look at some of the common fractions as we move down from the top of the fractionating column.
Some of the smallest molecules are between 1 and 4 carbons in length. This fraction has such a low boiling point that it is still a gas when it is removed from the very top of the fractionating column. This fraction is known as refinery gas or bottled gas. Bottled gas because it can be stored in bottles under high pressure. You could well have seen bottles of propane or butane running barbecues or heaters in your home, and these are examples of the refinery gas fraction. Petrol is between 5 to 7 carbons in length. It is still a fraction of small chain hydrocarbons, and therefore these vaporise at a low temperature and are easily ignited. This makes it useful as a fuel in the internal combustion engine of a car or other vehicles. Naphtha is not such a useful fuel, but it is a valuable source of organic molecules which can be cracked to make more fuels or form alkenes. Alkenes can be turned into polymers, and polymers can make plastics which are used in our everyday lives. Kerosene has an important use as a fuel for jet engines, in aircraft and even in some rockets. Kerosene is also called paraffin in some parts of the world and is a common fuel burnt in paraffin or kerosene lamps used for lighting. Diesel is the next fraction. It is a common fuel in cars, vans and lorries. It is not as volatile as petrol, and instead of spark ignition, it ignites under compression. Below diesel are the residue fractions. Fuel oil is a fuel used in power stations and ships. Lubricating oil, which sticks to surfaces and reduces friction and protects from rust. And finally, waxes, which along with the oils can be used for polishing surfaces. The very bottom fraction is bitumen. This is a thick black adhesive used on roads, either as the surface finish or combined with stone chippings to create a solid, resistant material. It can also be used to cover roofs due to its waterproofing properties. All these fractions are separated from the crude oil mixture. To try and explain the importance of crude oil, consider these facts. Oil is formed deep in the ground from the effects of long-term heat and pressure on ancient plant and animal remains. The oil is either pumped to the surface or rises to the surface under its own pressure. This crude oil is a mixture of many different hydrocarbons. It is shipped to the refinery by tanker or pumped locally by pipe. These hydrocarbons are separated using a process called fractional distillation. The crude oil is heated in a furnace and fed into a large heated tower. The tower consists of many levels where repeated condensation and vaporization occurs as the hydrocarbons rise through the tower. Because boiling point increases with molecular weight, lighter fractions will move further up the column while heavier fractions remain near the bottom. The repeated condensation and vaporization increases the purity of the fractions found at each level. These fractions are piped off to other locations around the plant for further purification and distribution. Many hydrocarbon products are produced at the refinery. The chief products include alcohols such as the solvent methanol, liquefied petroleum gas used in gas grills and for heating homes, gasoline, jet fuel, kerosene, heating oil, diesel fuel, light and heavy lubricating oils, petroleum jelly, greases, and asphalt, which is mixed with gravel to make road surfaces.